بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وقال الله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت. Obviously we know that the sun eclipse will stay around, like Hazrat Dawud Barakatuh mentioned, about 4:15, 4:30. So we should continue making tasbihat, istighfar and du'as, and if possible giving charity as well, whether it's to the poor or whether it's to the masjid, it doesn't matter. Lillah charity can be given to the masjid as well or to the poor. Lots of istighfar and du'as as well. And before I continue with this topic of sun eclipse, obviously many of you, alhamdulillah, Muslim brothers and sisters, have a very soft heart and they usually cry at the time of iftar and making du'as, especially like this solar eclipse. So you got to make sure that when tears come out of your eyes, that you don't swallow them. जब आप रोए दुआ मांगने के लिए, रमज़ान की रोज़ा हो या नफिल रोज़ा हो, वाजिब रोज़ा हो, तो रोज़े के हाल में आप रोए, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, यानी रोज़ा का वक्त शुरू हो चुका है, या ऐसे मौके पर जैसे सूरज गिरन के मौके पर, तो आँखों में से आंसू निकले, आप उसको swallow ना करें. I had a question last year, so it was something new for me. पीछे से मुझे किसी ने पूछा कि कोई रोए, चाहे अल्लाह के खौफ से रोए या किसी जनाजे मौत के पर रोए, और वो आंसू निकल जाए तो मसला क्या है, रोज़ा टूट जाएगा या नहीं. So this was a very strange question that was asked me, which I never thought of it before. The question was that if somebody cries, whether it's the crying because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, or because somebody has passed away in the family, or some other sorrow, the tears come out and he or she swallows the tears. What is the ruling of the fast? तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि 2 से ज़्यादा आंसू अब निकल जाएं तो रोज़ा टूट जाता है. So alhamdulillah, the fatwas, Shami and Alamgir and others, it said clearly that if more than 2 tears are swallowed, the fast will break. So in fasting time, if you do cry, make sure that you keep continuing wiping your cheeks so it doesn't get down to your lips and that you don't swallow it. तो अब रोए, बेशक रोना बहुत अच्छी चीज़ है, रोना चाहिए, दुआएं कबूल होती है. ऐसे मौक़े पे नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे. लेकिन इसका ख्याल रखा जाए कि आँखों में से आंसू निकले तो उसको साफ़ कर लिया करें. और instead of using a handkerchief or tissue paper, these tears are very, very valuable. The only thing that can extinguish the fire of Jahannam are the tears. जहन्नम के आँख को बुझाने के लिए जो है वो आँखों का आंसू है. तो उसको लेकर अपने जिस्म पर मल ले. Take them and rub them on your body wherever you can. लेकर, not on here. People generally after a long dua, especially on night, people cry and then they start using the tissue paper and they go like this and they like this. These are valuable, worth billions, the whole world. If you cry even equal to the eye of a fly, hadith. आँखों मक्खी के आँख के बराबर आंसू, इतना minute drop, the size of a fly's eye is very small. तो ये भी जहन्नम से आँख से बचाएंगे आपको. Even that will save you from Jahannam. So instead of rubbing the handkerchief onto your eyes and on then drying your, take them valuable tears which are more valuable than the whole universe and remove on your body. Allah forbid, if Jahannam is entering Jahannam, at least that part will not burn in Jahannam. जहाँ आँखों का आंसू जिस्म को लगता है वो जहन्नम के आग के अंदर नहीं जलेगा. So that is another thing you have to remember. Instead of drying them, rub them on your body, on your face, etc., wherever you can. And don't swallow the tears. उसको निगले नहीं.
Sunnat method was namaz first and then the bayan, which I am giving, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam performed 2 rakats, but the fuqaha said main purpose, not only 2 rakat, azkar, tasbihat should be continued. Whether it's 2 rakats or 4 rakat, the tasbihah, subhanallah, Allah Akbar, the Holy Quran should be continuous. After the salah, Rasulullah made long qiraat, a long ruku, and long sujood. When the sun eclipse was starting, सूरज ग्रहण शुरू हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक घिसते हुए निकले मस्जिद की तरफ और सहाबा का मजमा साथ में चला गया मस्जिद के अंदर. The Sahaba, the narrator of the hadith in Bukhari, says that when the sun eclipse started, quickly Rasulullah dragged his upper cloak and wearing it and dragging it in a lot, he ran to the masjid to pray salah. This is one thing we should always do. When there is something serious, you should pray namaz. Turn to Allah Ta'ala. Ya Musta'in bis sabri was salah. Whether it's solar eclipse, moon eclipse, whether it's lightning, whether it's heavy rainfall, thunder, generally people, even now as I speak, people are looking at the solar eclipse. That is wrong. You look at the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Get such a big sun and its light has been taken away. That's what Allah said, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. The sun and moon will get together on the day of judgment and thrown into Jahannam. And the fuqahas or mufassir say, the light will be taken away from the moon and the sun. सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी अल्लाह ताला खत्म कर देंगे और दोनों को जहन्नम में डालेंगे. इन्हें शम्स कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, when the sun will become without any light. And this is an example that we see today. अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब सूरज फूंका जाएगा, सूरज बिल्कुल बेनूर हो जाएगा, रोशनी ही नहीं होगी. और ये आज eclipse यही है. So when these things happen, it shows that how the judgment, and it shows that Allah Ta'ala's power, Allah की ताकत, Allah की कुदरत, ये हमारे सामने एक झलक बताई जाती है. This is that shows a bit of His power in this world like this. तो ये earthquake हो, lightning हो, thunder हो, बिजली हो, बारिश ज़्यादा हो, तो हमारे लोग उसको देखकर वाव वाव करते हैं. देखना अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादल देखते तो आप जल्दी से मस्जिद में तशरीफ ले नमाज शुरू फरमा देते. कैसा ना हो कि कौम आद और कौम समूद पर जो अज़ाब आया ऐसा मेरी उम्मत पर यहाँ आ जाए. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would see the clouds or the lightning coming towards Medina, he would race to the masjid and start salah. He would be worried that it could be the same punishment that was given to the people of Ad and Thamud, the people of Sayyidina Hud alayhi salam and the people of Salih alayhi salam. So when these things happen, you turn to Allah Ta'ala, paying namaz, not there going sightseeing, looking at the eclipse or looking at the lightning and saying, wow, look at that. No. should fear Allah subhanahu wa ta'ala. तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाई. उसके बाद आपने पूछा कि क्यों होता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked the Sahaba, why does this happen? तो कहने लगे बाद साहबा कि किसी बड़े आदमी की पैदाइश हो या बड़े आदमी का इंतकाल हो जाए तो ये सोलर एक्लिप्स होता है. और उस दिन ये भी हुआ कि कुछ घंटे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ. Just before the solar eclipse, Sayyidina Ibrahim radiallahu anhu, the son of Rasulullah had passed away. So the Sahaba say that we believe, or up to now we believe this, that the solar eclipse happens because someone great has been born or someone great has passed away. And in this case, they're trying to say indirectly that your son, is the Prophet's son has passed away, that's why this solar eclipse has happened. तो उनका ये कहना था साहबा का कि हमारा तो ये अब तक ये ख्याल है कि भाई कोई बड़ा आदमी पैदा होता है या बड़ा आदमी मर जाता है तो ये सूरज गिरन इस तरह हो जाता है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का कुछ घंटे पहले ही इंतकाल हुआ था. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसा नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that is not correct. It doesn't happen because of a great person being born or someone great passing away, like you say my son has passed away. ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ या कोई बड़ा आदमी का इंतकाल हुआ, जैसे मेरा यहाँ बेटे का इंतकाल हुआ इसकी वजह, बल्कि अल्लाह ताला अपनी ताकत, अपनी ग्रेटनेस, पावर इंसान को बताते हैं. अल्लाह ताला शोज हिज पावर एंड ग्रेटनेस टू मैनकाइंड. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाउ दीस थिंग्स दैट यू शुड लिसन एडवाइस ऑल इन बुखारी एंड मुस्लिम शरीअह, द हदीस बुक्स.
These are the things that Prophet said at the time of eclipse, the solar eclipse. ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई है। फरमाया कि अल्लाह ताला गयूर है। गयूर कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। This is in Bukhari. Rasulullah sallallahu then said that Allah has self-respect more than anybody. We won't have self-respect. अपन गैरत आवे कि क्या, why? We all have this self-respect in ourselves. But those most gayur is Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said, Allah ta'ala has made zina, sexual intercourse, illegal, haram. नाजायज ताल्लुक से जिनाकारी को अल्लाह ताला ने अपने बंदे मर्द और औरत दोनों पर हराम फरमाया. These are the words. Illegal sexual intercourse, Allah Ta'ala has made haram on men and women. Allah has this self-respect. Musalman ho to zina kare. How can a Muslim do zina and adultery? You have to stay away from it. If you are young, get married. Shadi karo. If you can't afford it, somebody asked me in the youth program a few days ago, if you can't afford it, then what should you do? ये मुझे किसी ने यूथ प्रोग्राम मुझे पूछा रहा जिम के अंदर 2-3 दिन पहले कि शादी तो चलो हम कर लेंगे लेकिन पैसे नहीं है, हम जिना के लिए मुब्तला हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो I said the fuqaha have said you can borrow money, you take कर्ज just to save you from zina, borrow money, कर्ज लेकर शादी करो, लेकिन शादी करनी पड़ेगी. तो एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ये फरमाया, सूरज गिरन के बाद नमाज के बाद आपने जो खुतबा दिया बयान था, तो उसने ये फरमाया कि अल्लाह ताला गयूर है, गैरतमंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट अल्लाह का बहुत ज्यादा है कि मेरा बंदा होकर हराम कारी जिना करे, तो अल्लाह ताला हराम फरमाया जिना को मर्दों पर और औरतों पर भी. From this, these mobile phones are very dangerous. Meeting with opposite sex is very, very dangerous and it can lead to zina. You stay away from all these things. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Zina करीब मत जाओ. And forgive me, I'm not trying to specifically target anybody individually or any group. These flats that you live in, you have to be very careful. ये flats में जो आप रहते हैं, बहुत careful रहना चाहिए. I've not been in since I last came, but I know when I've been using the staircase and walking around here and there, maybe there are lifts as well. The doors are open, you're walking past the houses, the rooms. You're coming in the lifts, if there are lifts there. Here I've entered the lift as well. There's ladies there, a lady by herself, you can't enter that lift. You walk in the stairway, stay away, let the girl go, let it go first. Myself, I don't practice in Haramain Sharif when I go for Umrah or Hajj, I'm on the top floor and I'm in the lift. I've just come one floor down, one lady walks in, I walk out straight away. You can't stay in that lift by yourself. There's nobody else besides that girl. So these rooms in these flats are very open. It's not like the houses where the only family members are there. The husband is there, wife is there, mom, dad, brother, sister, they're all there. That's family, that's all maharim. But in these flats, when you walk across the room, the doors are open, there's ladies there. You can't look like this, look down. Tell a believing men to look down. Tell a believing ladies, Muslims, to look down, put the gaze low. ये शैतान के तीरों में से एक तीर है. So in these flats, obviously, you are living there, you can't afford houses, alhamdulillah, you're not buying interest. That's the main thing, you're not taking interest, alhamdulillah. So you're living there, but you have to be very careful. So one of the things that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in this solar eclipse speech, that Allah is ghayyur. Allah has a lot of self-respect, more than anything in the whole universe. And He has made illegal sexual intercourse haram on both men and women. Ye ek baat farmayi. Second thing He said, that I saw many ladies in Jahannam. Most of the ladies were in Jahannam more than men. मैंने देखा नमाज पढ़ते हुए आसपास नमाज, I saw Jahannam. And most of the inhabitants of Jahannam were ladies. ज़्यादा रहने वाले उसके अंदर औरतें थी. तो साहबा ने पूछा कि औरतें की वजह क्या है? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he said this, that there were more ladies than men in Jahannam, the Sahaba asked naturally the question that why ladies, why not men? तो फरमाया कि दो वजह से, इसलिए कि नेकी के करने में वो कमी करती है, पीछे रहती है. She does not do many good deeds as she should be. And we can see, for example, ladies in our home, generally we see namaz time, Zuhr for example, starts at 1:15. An example, it finishes at 5 o'clock. They pray namaz at 4 to 5, 10 to 5.
the delaying the namaz, making qaza. Tarawih, Salat Tarawih, 20 rakat, Sunnah Muakkad. How many of the ladies are praying Salat Tarawih? Isha namaz, then they're going to sleep. They get tired frying and cooking all day, suhoor and iftar. When it comes to after cleaning, they're so tired, they haven't even got the strength to pray the Salat Tarawih. Not even Salat, they don't even pray the Isha namaz, many of them. तो नेकी के अंदर औरतें कमी करती है, नेकी के अंदर वो पीछे रहती है. एक वजह ये आपने फरमाई. So one reason Rasulullah mentioned is that they don't perform good deeds abundantly. They're very behind in doing good deeds. That's one reason. फिर फरमाया the second reason कि शौहर की नाशुक्री करती है. They are ungrateful to the husband. And then Rasulullah says himself that one of you treat your wife in the best way and do everything for your wife. You give everything that you can. And one day you can't do something, she said, I've never seen anything good in you. And that destroys the whole thing, basically. The good deeds that she should have got are destroyed by just saying these small words. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दूसरी वजह यह है कि शौहर की नाशुक्री करती है. फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से एक शख्स अपनी बीवी की बहुत लुक आफ्टर करते हो, केयर करते हो, सब कुछ देते हो, लेकिन एक दिन या एक वक्त ऐसा है कि आप न कर सके तो क्या कहती है, मैंने आपके अंदर कोई भलाई नहीं देखी. शौहर कहते I've never seen anything good in you. तो ये कहने की वजह से ऐसे बुरे अल्फाज है कि सारे कुछ नेकियां उसने किया वो सब खत्म हो जाती है उसकी. तो ये दो रीजन बताई. That's another thing that Rasulullah mentioned in the khutbah after Salatul Kusuf. The Sahaba said to Rasulullah that whilst you're praying namaz, you move forward and then you move backwards. फिर साहबा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमने देखा कि आप नमाज के दरमियान आगे बढ़े और कुछ पीछे हटे, उसकी वजह क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that when I move forward, a bunch of grapes came in front of me from paradise. फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूर का बंच दरख्त सामने आया, तो मैं आगे बढ़ा लेने के लिए. I wanted to take it, but it was taken back. पीछे हटा and I moved back. अगर मैं उसको ले लेता, if I had taken it and I would have given it to you, you would have eaten from it until the day of judgment. अगर मैं अंगूर का वो गोशा बंच ले लेता और आपको देता तो क़यामत तक आप मुसलमान लोग उसमें से खाते, लेकिन वो पीछे हो गया. It turned back, so I moved back afterwards. और पीछे जब मैं हटा, the reason I moved back a few steps was because the fire of Jahannam came in front of me. I was scared that it might burn my face. फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम मेरे सामने लाएगी, तो मुझे डर लगा कि वो गर्मी मेरे चेहरे को जला देगी, तो मैं पीछे हटा, I moved back. फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तुम जानो वो चीज़ जो मैं जानता हूँ, then रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा, if you only knew what I know, you would laugh less and cry more. अगर तुम्हें पता चले जो मैं जानता हूँ तो तुम रोओगे ज़्यादा और हंसोगे कम. And he also mentioned Hazrat Asma radiallahu anha. She was in the room and she says that all of a sudden the Sahabas was crying and and wailing and tears and screams were coming out of the Sahaba. And the words of Rasulullah got drowned, so I could not hear what Rasulullah said. सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के करीब घर में थी, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में थी, और मेरा कान दीवार के करीब था कि मैं सुनूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं. I was listening to all the speech of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन अचानक साहबा इतने रोने लगे, चिल्लाकर रोने लगे और गिर रहे थे. साहबा were falling all over the place crying. So the words of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got drowned. I could not hear. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक जो है वो दब गए और मैं सुन नहीं सकी. जब काफ़ी देर के बाद खामोश हो गए साहबा, तो मैंने करीब के साहबी से पूछा कि अल्लाह के बंदे के नबी के कसम क्या चीज़ फरमाई कि इतने आप रो रहे थे और अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं न सुन सकी. When the crying stopped and calmed down, the sahabas calmed down, she said, I asked the sahabi near the wall of the house, I said, oh servant of Allah Ta'ala, tell me, all of a sudden, why did you all cry and scream and tears and you're all over the ground crying and, what was the reason? I could not hear the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो फरमाया उस साहबी ने अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि नबी करीम साहब फरमाया कि मेरी उम्मत का ट्रायल एंड टेस्ट कब्र के अंदर ऐसा है जैसे करीब दज्जाल के फितने के. So the Sahabi said, the trial of my ummah in the grave, the questions and answers
that has to be given and the question will be answered by Munkar and Nakir. The trial and test is very, very close to the trial and fitna of Dajjal. और दज्जाल का फितना जो है इतना खतरनाक है कि हर नबी ने पनाह मांगी. The trial and test and fitna is so great that every prophet, including Prophet ﷺ, asked Allah Ta'ala's protection. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, I seek protection, that you protect me from the trial and fitna of Dajjal. हर नबी ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत का कब्र के अंदर जो सवाल जवाब होगा, हिसाब किताब होगा, ऐसा होगा करीब करीब दज्जाल के फितने के. ये फरमाया, my ummah will be tested in the grave and the trial in the grave will be very, very close to the same kind of level of the fitna and trial of Dajjal. दज्जाल के फितने से हम तो बच जाएंगे क्यों, हम नहीं होंगे. Most likely obviously will not be around for the test of Dajjal, but we got to be prepared for the test and trial of the grave. तो बहरहाल ये कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया. और उसके बाद फुक़हा ने लिखा है कि नमाज हो जाए और वक्त बाकी ऑफ सन गिरन अभी है, द सन एक्लिप्स आफ्टर द सलात, ये कंटिन्यू प्रेइंग कुरान शरीफ, तस्बीहात, इस्तिग़फ़ार. अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला आखिरत के मनाज़िल हम सब पर आसान फरमाए. जो जिंदा है वो भी, जो आने वाले हैं मुसलमान आने वाले हैं उन पर भी, और जो मरहूम हो चुके अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए. तमाम मरहूमी की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे औलाद नस्लों के ईमान और इस्लाम की पूरी हिफाजत फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ा खैर अता फरमाए. उम्मत को कैसे कैसे बेहतरीन तालीम फरमाई, कैसे कैसे गाइडेंस हमको दी है. अल्लाह ताला गिव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट in the hereafter for the beautiful and excellent guidance he has given the ummah of his and which he loved all his life. He loved and cried for us. अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराजात खूब खूब बुलंद फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर उम्मत की तरफ से नसीब फरमाए. व आमीन अल्लाहुम्मा आमीन. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. Whether you want to stay here or go home and pray tasbihat, you can continue. It's up to you. यहाँ बैठ कर पढ़े, घर जाते पढ़ते जाए. आप